So welcome to this live interactive session of Unacademy Cat channel. My name is Ronak Shah and today I have with me two students who appeared for CAT 2020. And as I have mentioned in the thumbnail, that the objective is to help you understand how can we go from 75 to 90 percentile, how we should ensure that we do not get stuck at 75 percentile. So quickly show me a thumbs up if all of you are able to hear me, guys. Yes, I can see many students, and yeah, thanks for joining. And I'm sure this particular session, this particular video will be helpful to you. Yes, great. Hi Jignesh, Churchill, Kshitij. Hi Janvi, Diya, Achal, Vicky. Great. Good evening, guys. How are you all? Right, great. So yes, let me quickly introduce the students. So we have with us Mr. Abhinav and we have Ms. Kashish. Hi Abhinav. Hi Kashish. How are you? Good evening, sir. Hi, sir. Good evening. Okay. Right. So Abhinav, starting with you, why don't you quickly just introduce yourself so that our viewers should know a bit about your background. Yeah. Hi, my name is Abhinav Bansal. I am from Ranchi. Currently, I am working with TCS and I am also preparing for CAT 2021. Okay. And what was your CAT score, Abhinav, if you can just mention? Yeah, in the last time I attempted CAT, my score was 74%. 74 percentile. Okay. Yes, Kashish? Hi, I'm a final year undergrad student pursuing my BCom. I'm from Lucknow. That is it. Okay. Right. Okay. Fine. So Kashish, you are in which year? Final year? I am in my final year. Right. Okay. So you said you appeared for CAT last year, right? I mean, you will be completing final year this time, right? Yes, sir. Okay. Fine. Okay. Great. And what was your score, Kashish? If you can just mention. So it was 63. 63 percentile. But your quant and LRDI scores were good, right? Yes, I scored in 80s in both of my LRDI as well as one section. Okay. And you must have scored very less in VA, is it? Yes, sir. Right. So this is the objective of this session. Friends, let me quickly tell you, I mean, many of you have been attending my sessions, and as I always tell you that, once you reach to 75, 80 percentile mark, that means your concepts are good, but then it takes a little bit more efforts to cross that 90 percentile mark. Okay. And this is what we are going to understand through the students, through their journey, through their experience, that what they could have done more to ensure that they are not stopping at just 75 or 70 or 80 percentile, right? And that's very important because most of the time the discussions have happened with the toppers. Even I have invited students who have scored 99, got IM A, C, something like that. But then we also need to understand about from those who couldn't reach there and what they could have done better. So that is the objective of this particular session. So let's go and let's understand from you, Abhinav. So Abhinav, can you just tell me, I mean, so when now you analyze things, because you are going to appear for CAT 2021, I'm sure last CAT must have given you good insights that how can you ensure that you cross 90 percentile this time. So what you could have done more in just before last CAT that you could have got 90 plus percentile that you are going to do this year? आप इस बार क्या ऐसा एक्स्ट्रा करोगे कि जिससे इस बार आप लास्ट टाइम की तरह 75 पे स्टॉप ना करो? तो वो आप बता सकते हो? जब कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि कैट एग्जाम जब एग्जाम हॉल में थे तो ये पता नहीं था कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, वो क्वेश्चन मेरा टाइम वेस्ट करेगा और सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ये मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो बनेगा, मुझे आइडेंटिफाई करने का वो क्षमता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम एक तो बचना चाहिए, दूसरा नेगेटिव नहीं करना चाहिए। Okay. Right. So yes, Abhinav is mainly talking about the question identification strategy. So Abhinav, क्या ऐसा कुछ हुआ था कि एग्जाम के दौरान आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिसमें आपका 10 मिनट चला गया? ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ पेपर में, LRDI में या क्वांट में पर्टिकुलरली?
LIDI में तो सर यही होता है, बड़ा सा पैराग्राफ की बात है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत सारा लग जाता है, 7 मिनट 8 मिनट एक क्वेश्चन पे लग जाता है, पर उसके बेसिक क्वेश्चन पूछे होते हैं, सोल्यूशन एक का भी नहीं आता है। तो सर वहाँ उसके बदले क्या करना चाहिए था कि 5 सेट्स अगर हैं तो 5 सेट्स तो बनाना नहीं है ना, उसमें से 3 सेट पहले बनाने हैं, जो 3 सेट मुझे इजी लगते हैं वो 3 सेट सिलेक्ट करने बनाने हैं, टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी काफी आ जाएंगे 3 सेट पे। ओके राइट। तो क्या ऐसा कुछ क्वांट में हुआ था कि आपने 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए और उसमें 5-6-7 मिनट गलत चले गए, फिर बाद में आपको पता चला कि ये नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, ऐसा कुछ क्वांट में हुआ था? क्वांट में भी सर ये हुआ था ना कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है टॉपिक उसके क्वेश्चंस हम बना रहे थे, और तो हम ये भी सोचे कि हम जिस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन वापस आने का टाइम नहीं मिलता है आगे जाके। आगे जाके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड आर वेरी फ्यू, so I have to attempt some more questions, so I selected a question in which I was not strong, so that just wasted my time. Okay, right. So yes, coming to you Kashish, and guys see, so Abhinav ने mainly यही चीज बताई कि question identification is very important, right? Some students are asking about LOD कितने करने चाहिए, LOD 1 2 3, क्या 3 करने की जरूरत है या सिर्फ 1 और 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो दोस्तों हम LOD के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले हम कशिश से जानते हैं कि उसका एक्सपीरियंस, मतलब उसके हिसाब से क्या बेटर कर सकते थे सो दैट शी कुड हैव स्कोर मोर, राइट? एंड यस या कशिश, सो यू कैन जस्ट टेल आवर व्यूअर्स के आपको क्या लगता है आपने क्या नहीं किया जो आप कर सकते थे जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता था? I guess my biggest mistake was that I never used to analyze my mocks. Okay. जैसे RC पढ़ते टाइम skimming करता है, I used to do that with the solutions which were given. मैं mock का analysis नहीं करती थी, उसको skip करके next mock पे चली जाती थी. Like I gave 60 to 65 mocks in just 1.5 months before my examination. And इतनी quantity में mocks देने के बाद भी if you don't score well, तो this means there was some problem. और वो प्रॉब्लम जब एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आई एनालाइज माई कैट का एक्चुअल पेपर, तब मुझे पता चला कि माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दिस, आई नेवर यूज्ड टू एनालाइज माई मॉक्स। सेकेंडली, जब मैं मॉक्स देती थी तो उसके बाद मॉक अगर इफ इट वाज सपोज्ड टू बी ऑफ 2 hours 40 हर सेक्शन के बाद आई यूज्ड टू जस्ट क्लिक ऑन दैट क्लोज बटन और बस रेस्ट करती थी। उसके बाद आई यूज्ड टू गिव अनदर सेक्शन फॉर द DLR, एंड उसके बाद फिर से रेस्ट एंड देन फिर कौन सा सेक्शन। आई गेस दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक कि मॉक एक गो में बैठ के देना सीखो, मॉक को मॉक की तरह लिखना चाहिए, राइट? सो नॉट अ सेक्शनल टेस्ट। राइट गाइस, सेक्शनल टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको बिल्कुल जो एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट होता है वैसा ही एनवायरनमेंट बना के लिखना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका मॉक चल रहा है और आपको चाय भी सर्व हो रही है, बीच में बिस्किट्स भी आ गए और थोड़ा आप बीच में उठ के घूम फिर के थोड़ा फ्रेश होके वापस आके बैठ गए। दैट्स नॉट द मॉक टेस्ट, राइट? सो एंड कशिश इज एग्जैक्टली सेइंग दैट पॉइंट कि पहली चीज मॉक टेस्ट आप थोड़े से कम लिखो, 60-65 नहीं लिखोगे तो चलेगा। आप 40 मॉक्स तो डेफिनेटली आपको लिखने चाहिए, बट उसके बाद उसको एनालाइज करो। एंड कशिश, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लास्ट 1.5 मंथ में जो आपने इतने सारे मॉक्स लिखे उसकी जगह पे अगर आप थोड़ा पहले से मॉक लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा ज्यादा अपने आप को टाइम देती तो इंप्रूवमेंट बेटर होता? यस एक्चुअली, मतलब अब लाइक इफ यू सी ऑल द टॉपर्स अब उनके वीडियोस जो आते हैं, तो मैंने आई रिसेंटली वॉच दिस वीडियो, द गाय स्कोर्ड 99.92 परसेंटाइल, एंड उसने भी यही चीज बोली कि मॉक एनालाइज करो, एंड मैं एज यूजुअल मैंने उससे भी इग्नोर किया कि बोलते हैं बोलने दो। तो मतलब आई गेस उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वाज दैट कि उन्होंने मॉक्स अभी से देना स्टार्ट किया था, लाइक एट दिस टाइम इन जुलाई, एंड मैंने वो जो लास्ट मोमेंट पे मॉक्स लिखे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मॉक्स, तो दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन। Yes, okay. So before we go ahead, Kshitij is saying sir CAT interview हिंदी में accept करते हैं क्या, और we need to work on our English? Kshitij, definitely you will have to improve your English.
but I have seen some students clearing CAT interviews of top IIM interviews, particularly top IIMs, because they have such a good achievements, and they, even though they might not be so fluent when they speak, but they speak so meaningful things that you rarely focus on their language ability, but you focus on the thoughts more. So there are this kind of students, but they are just limited gems. But otherwise, an average student needs to have good communication skill. You need to be well prepared. So please start working on that. Okay. So yes, coming to you, Abhinav. तो अभी अगर आपको क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे उसके लिए, या इस बार क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो? और दूसरा, स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सारे टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, या आपने कुछ टॉपिक्स छोड़े थे जिसकी वजह से आपका कम स्कोर हुआ? क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो अभिनव? कैट लिखने से मुझे जो पता चला, सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रिलेट कर पाएंगे जो कैट अपीयर करते हैं। ओके। उनका जो हर स्टूडेंट का ना अपना कुछ चैप्टर्स होता है जो स्ट्रांग होता है, कुछ चैप्टर्स होता है जो समझ में नहीं आता है। ओके। तो गलती ये हुई कि सिर्फ स्ट्रांग अपने चैप्टर्स को इम्प्रूव किया और कैट एग्जाम अपीयर किया, लेकिन सॉल्यूशन था कि सारे बेसिक चैप्टर्स को, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए था, सारे क्वेश्चंस आने चाहिए थे, कम से कम डिफिकल्टी 1 के तो सारे चैप्टर्स आने ही चाहिए थे। उसके बाद उनके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें तो मास्टर कर ही सकते थे। ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे कि कैट एग्जाम में जब हम लोग अपीयर करते हैं तो 3 आवर्स का एग्जाम या 2 आवर्स का एग्जाम में 3 सेक्शन अटेम्प्ट करते करते बहुत टायरिंग हो जाता है। पहले VARC का सेक्शन जिसमें हम लोग को वो सेट्स पढ़ना पड़ता है लॉन्ग, फिर DILR का जिसमें फिर से लॉन्ग सेट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आता है क्वांट्स में तो हम लोग ये अचीव करने का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा। करेक्ट। सो गाइज, वन थिंग दैट अभिनव हैज मेंशन, जो उसने क्लियरली बताया, जो मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूं, कि आप LOD 1 पहले सबसे पहले कंप्लीट करो। फर्स्ट, देयर इज नो स्कोप ऑफ लिविंग एनी ऑफ द एरिया। ठीक है, जैसे शायद कशिश आपके साथ में ये हुआ था, आपने ज्योमेट्री पे थोड़ा कम फोकस किया था, करेक्ट कशिश? यस सर। राइट। एंड आपको आपने एग्जाम में देखा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था, जरा आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? I wasn't very good with geometry and mensuration part, so I skipped it. But exam में after my exam, तो जब मैंने question देखा, there was this mensuration question in slot 1. It was a very 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 basic question. I couldn't do it just because मुझे formulas नहीं पता थे mensuration के. Exactly, guys. So this type of questions are called SITTERS. 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 मतलब straight question based on formula. If you know the formula, you can solve it. So this is what you should be doing. If you don't like modern math, से progression आपको पसंद नहीं है, that doesn't mean progression के chapter कोई नहीं देखा। अरे basic arithmetic progression, उसमें sum of n terms का formula, nth term का फॉर्मूला, सेम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले करके जाओ कि अगर एक स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया आप कैलकुलेट कर सकते होने चाहिए। Guys, are you getting this point, everyone? So please make sure that you are solving at least LOD 1 of all the topics that are there in quant syllabus, based on which the questions have been asked. You never know when an easy question will be asked from there, right? Okay, so just a moment, guys, is it stucking? Is the video stucking, or you are able to see us clearly? Is there any lag, everyone? If you can just confirm over there. Okay, fine. So yes, Kashish and Abhinav, starting with you, Kashish, any other message that you want to give to the viewers, so that they can do better actually? Yes sir. Economics section weak है, commerce section weak है, और suppose history या फिर psychology नहीं पसंद है, तो I would suggest कि इन topics को और अच्छे से read करो, read the articles, read these articles from the Hindu, जितनी भी बुक्स के मटेरियल है या फिर जितने भी और मटेरियल मिल रहे हैं उनसे ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थीम्स, मतलब साइकोलॉजी और इन सब पे बेस्ड देखो अगर उसमें वीक हो। दैट इज इट। Okay, so now many students are facing the similar problem, that how to improve in VARC. Okay,
Yeah, how to improve in VARC. So guys, as mentioned by Kashish, for VARC you just identify your weak area. If you're attending VARC sessions of any faculty, I'm sure they must be telling about different genres, that what all genres are there. So you need to have the diversified reading, so that whenever you come across a particular passage in the CAT exam, you should not feel uncomfortable about that. And that's the best way to improve in the verbal ability section: reading and reading. Right. Okay, so yeah, let's understand if they have any specific questions before we wind up. So let me tell you to all my viewers, before we go ahead with further discussion, that first of all, we are going to have this kind of this kind of series of sessions. Every week I'm going to interact with at least one or two the CAT 2020 taker, and we are going to understand from them that what tips do they have to give to the students, because I have been telling you the same thing again and again. Probably if it comes from the mouth of the student, the one who appeared, you may find it slightly more believable and you may implement that. That's the objective. So we will do that. And apart from that, just to quickly tell you that on Unacademy, we have, we conduct live classes on Unacademy platform, and you can definitely go for Unacademy subscription so that you can get my guidance, and that is very much necessary. And after this, we'll talk about guidance also. So go for that. You get along with that test series and GDPI prep and plenty of practice questions. So guys, please explore description for more information related to the new the plus subscription, and new batches are starting very soon. Every week we are starting new batches. And also do not forget to participate in the combat exam. The link has been provided in the description. Right. So coming back to you, Abhinav, how important it is for you to get a good guidance. Did you get a guidance, any kind of guidance when you appeared for CAT last year, and how did it affect you? You can just mention that. I think that my low score was also subject to lack of guidance. Okay. This time I suggest to myself and to every person of my age group who is appearing for CAT कि जिनको पता है उनका एक्सपीरियंस हमें यूज करना चाहिए. गाइडेंस बहुत जरूरी है. हो सकता है कि जितनी मेरी नॉलेज थी उतनी में 74 जो आया वो 80 आ सकता था सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस से. बहुत सिंपल है. जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए वो जो नेगेटिव हो गए वो ना होते तो ये गाइडेंस की वजह से हो सकता था. तो गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. Okay, right. How about you, Kashish? If you got any mentor, if you could get, if someone guided you during your preparation, or you missed that particular aspect? Yes, I joined an institution last year. I wouldn't name it. Correct. Yeah, but I guess they lack that guidance thing, because अगर मुझे वो guidance, proper guidance मिली होती, तो I would have scored better. मेरे पास doubts थे, but I would have, I just had that option of posting those doubts on the group and not ask the teacher directly कि sir बता दीजिए कैसे होगा. तो I would have, वो एक problem थी, because students' opinion is different from that of the teachers. जो teachers answer बताएंगे वो तुम्हें एक अलग level पे समझ में आता है as compared to जो बच्चे group पे से picture click करके भेज देते हैं. Okay, yeah, that's true. Now some questions are coming up. Why not focusing on starting areas to Deepak is saying something. Why not focusing on starting areas to make even more stronger, rather than focusing on which you are not getting after trying hard? Deepak, see, there is no area in mathematics. If you are not good at mathematics, there is no area in mathematics which you can't understand completely. Yes, that may be possible that if you are not good at certain areas, you may not be able to solve, say, LOD 2 and LOD 3. But after understanding a particular concept, you can solve every question, be it logarithm, be it algebra. I'm saying simple question can be solved. If you're not able to do it, that means you are not putting right efforts to understand that. So somewhere you need to work on that rather than just brushing it under the carpet first. Second, we have variety of questions in AP. So is it necessary? Someone is asking this thing. Is it necessary to do it's LOD 3? Once again, the same thing, guys. LOD 3 पे आप तब आओ जब आपने पहले LOD 1 सारे टॉपिक का कर लिया है. There is no point कि आप 60% का सिर्फ LOD 3 करते हो और बाकी 40% एरिया का LOD 1 भी टच नहीं करते हो. So this is not advisable.
Sir, national and district certificates in class 6 will help. See, national level certificate आपका कोई भी स्टैंडर्ड का है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, बट वंस अगेन एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आपको बी स्कूल सिलेक्शन में देखने को मिलेगा कि जो भी आपका प्राइमरी स्कूल लेवल पे आपने किया है, मतलब 8th स्टैंडर्ड के पहले आपने जो भी अचीवमेंट्स है, जब तक वो नेशनल लेवल कोई ना हो, जैसे अगर मैंने 6th स्टैंडर्ड में मैथ्स का ओलंपियाड जीता था नेशनल लेवल का, सो यस आई कैन डेफिनेटली हाईलाइट दैट नेशनल लेवल पे मेरा टॉप 3 में रैंक आया होना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्कूल लेवल पे हर कोई जीतता है वो, तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड बिफोर 6th स्टैंडर्ड शुड बी, बिफोर 8th स्टैंडर्ड शुड बी मेंशन unless it is really very massive achievement. So please think about that. Okay, right. So yeah, that's it guys. I think whatever was the objective, we have fulfilled that objective. Hope you would have got the insights. Thanks Abhinav for joining us. Thanks Kashish, and yes, I'm sure you will do better this time, because you both of you have understood your weak areas and the mistakes that you committed. So please work on that, and definitely you can let me know in case if you need any help from my side, so that I can guide you for your preparation. Abhinav, Kashish. Thank you so much, sir. Yeah, thanks for joining us, and thanks everyone for joining late night. Now we'll meet once again on Monday for the live session. Till then, bye bye, take care. Yeah.